Good morning, Mohit. How are you? The voice is not coming. My voice is not coming. Okay, I'm just trying to do. Now, is it coming now? Yes, ma'am, it's clear. Okay. How are you and your parents, everyone at home? Yes, ma'am, that is great. We are fine. Okay, very good. Now, have you prepared something for today? Today's Yes, ma'am, presentation? Thought. Okay. Please share your if you thought. want to be more powerful First, in life, wait, beta, wait. How will you share your thought? First, you greet. thought of the day is if you want to be more powerful in life, educate yourself. And educate yourself. It's that simple. Okay. I repeat my thought. If you want to be more powerful in life, educate yourselves. It's that simple. It means if you want to be more powerful in your life, so you must have to educate yourself. It's simple. It is very And it is simple. Okay, to educate yourself is very simple, and that makes you most powerful in life. Very good, very good. Okay. Now, today I think future tense. You want to revise future tense? yes, ma'am. Okay. Put the heading as revision. I'm taking out my notes. Future tense is used. In future tense, Yes. Put the heading as future tense. Put the heading as future tense. Have you written? yes, ma'am. Okay. Now again there are four forms of future tense. I hope you know. Huh? Forms I of no, no. You know it is. I think you know simple future, or it is also called future indefinite. Second is future continuous. Third is future perfect, and fourth is future perfect continuous. Now please write a sentence in future indefinite, which is also called simple future tense. Have you written it? no. Quickly write a sentence. Okay, I hope you know that Tomorrow will and you will go to cinema hall. tomorrow you will go to cinema hall. Very good. Please write it down. Tomorrow you will go to cinema hall, or you will go to cinema hall tomorrow. Wherever you feel like, you can add tomorrow at the beginning or at the end. Okay, that means you have a plan to go to cinema hall tomorrow. Cinema tomorrow. Okay. So here you have used will. Now, can you make a sentence with shall? Michelle, Hmm. Do you know shall is used with which words? no, ma'am. You don't know? Okay. Shall is used with I and we. I and we. Write it down. If you don't know, please write. First, you write shall. Shall is used with I and we. Okay. And will is used with the rest of the
pronouns. If you write that I shall, if it is your plan, then you will write I shall go to the cinema hall tomorrow, or we shall go to the cinema hall tomorrow. What is the use of will? Will is used with he, she, it, you, they, and plural numbers. He, she, it, they, and any plural name, many names, many children, or whatever it is, okay, and plural numbers. Understood? Yes. Understood the use of will and shall? But Yes, ma'am. nowadays, we sometimes see that will is used with I and we also. Like I will definitely complete my homework. So what is the difference between two? One is I shall complete my homework, and second is I will complete my homework. Please write both the sentences. One is I will complete my homework by today evening. I will complete my homework by today evening. And second sentence is I shall complete my. Ma'am, by today evening. Yes, by today evening. Noted. Okay. And second sentence you write I shall complete my homework. Ma'am, what I shall? Complete my homework. Now, have you understood the difference, or can you tell me what is the difference between two? One is I shall complete my homework, and second is I will complete my homework by today evening. So what is the difference between two? Any idea? Yes, ma'am. Please tell me. Ma'am, we use will, ma'am, in particular time. Okay. Normally, shall is used with I, but here we have used will. The will shows determination. Means yes, definitely I will do. और shall में क्या है? Yes, I will do. मैं कर लूँगा. मैं अपना होमवर्क कर लूँगा. और I will do my homework का मतलब क्या है? मैं definitely I will do. Determination is there. Okay? तो please write the difference between two. आई के साथ जब आई और वी के साथ जब विल लगता है दैट शोज अ डिटर्मिनेशन. डेफिनेट. राइट इट डाउन. No, but I have to write it, I will not understand. If will is used with I and we, if will is used with I and we, that shows Yes, ma'am. the determination or definitely or something definitely happen. That shows the determination or something definitely happen. ठीक है. नॉर्मली क्या होता है आई और वी के साथ शैल लगता है, बट जब हम आई और वी के साथ विल लगाते हैं उसका मतलब है हम उसमें एक डेफिनेट बोल रहे हैं कि हाँ ये जरूर होगा. ओके. आई विल respect my parents. So what is the meaning of it? I shall respect my parents. What is the difference between two?
एक है आई शैल रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स और दूसरा है आई विल रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स. तो क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? आई शेल कि मैं अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देता हूँ. देता हूँ नहीं, दूंगा, फ्यूचर टेंस. हाँ, और आई विल में क्या है? एंड मैम इन विल को मैम आप एक बार रिपीट कर दो सेंटेंस के. आई और वी के साथ जब विल लगता है उसका मतलब है डेफिनेट, मैं जरूर दूंगा. आई विल रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स मीन्स मैं जरूर रेस्पेक्ट दूंगा, और आई शैल रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स का मतलब है मैं रेस्पेक्ट दूंगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. तो विल में क्या है? जरूर, जरूर होगा, जरूर वाली वर्ड आएगा, डेफिनेट. और दूसरे में क्या है कि हाँ मैं दूंगा. श्योर नहीं है कि दोगे कि नहीं दोगे, अभी तो बोल रहे हो कि दोगे, बाद में दोगे कि नहीं दोगे कोई श्योर नहीं है. पर विल का मतलब है कि श्योरिटी, तुम जरूर दोगे. अंडरस्टैंड? No, let's see. Now, write one more sentence with will. वी के साथ विल लगा के एक सेंटेंस बोलो जिसमें डेफिनेट शो हो रहा है, जरूर, जरूर वाली बात शो हो रही है. ऐसा कोई सेंटेंस बोलो. We will go to theater. We will go to theater PM. at 2 p.m. Okay, we will go to theater at 2 p.m. और शैल, एक इसी का एक शैल, सेम सेंटेंस को शैल यूज करके लिखो. Write a sentence, same sentence, it will be better. Then you will. We shall go to the theater. We shall go to the theater. So what is the difference between two? I mean, will sentence, it is, it means that something will definitely happen. Right. मीन्स आप 2 o'clock आप जरूर जाओगे थिएटर में, चाहे कुछ भी हो जाए. और दूसरा है हम जाएंगे. ओके, नाउ यू कैन राइट वन मोर एग्जाम्पल लाइक कोरोना विल एंड वन डे. कोरोना विल एंड वन डे. And second is Corona shall end one day. Corona shall End, over या end कुछ भी लिखो. मैम कोरोना shall end वन डे, एक दिन खत्म हो जाएगा. कोरोना विल बी ओवर वन डे और कोरोना शैल बी ओवर वन डे, ऐसे भी लिख सकते हो. कोरोना विल बी ओवर वन डे और दूसरा है कोरोना शैल बी ओवर वन डे. देयर इज डिफरेंस. ओके, वन इज शोइंग दैट डेफिनेट एंड अदर इज शोइंग जस्ट द फ्यूचर टेंस कि हो जाएगा. एक है हो जाएगा और एक है जरूर हो जाएगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट?
Okay. Yes, ma'am. Okay, now please write one. These are all simple present. Okay, or you can say present indefinite. Now you have to write one sentence in present continuous. Sorry. These are all future indefinite or simple future. Now please write one sentence in future continuous. Can I also make it five sentence? फर्स्ट टू राइट अभी तो एक ही लिखो ना. Homework. हाँ, यू हैव रिटन होमवर्क, यू हैव डन होमवर्क. Ma'am, नहीं, अभी कुछ नहीं किया. ओके, चलो अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का तो लिखो. 5 सेंटेंस बाद की बात है. फर्स्ट यू राइट वन सेंटेंस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. Yes, now tell me, what is the, how will you write it? Ma'am, subject plus will be Hmm. plus ing plus first form of verb plus ing plus object. Very good. Now write a sentence. Raju and her sister will be going to tuition. Very good. Raju and his sister, not her sister. Raju is a boy. I think his sister. Raju and his sister. Yes. Raju and his sister will be going to, क्या लिखा है? Tuition. Yes, ma'am. Okay. अब इसमें क्या है, इसमें एक थोड़ी सी बात क्या है कि व्हेन यू राइट दैट राजू एंड हिज सिस्टर विल बी गोइंग टू ट्यूशन, तो एक व्हेन आ जाता है. व्हेन का आंसर आपको देना है. राजू और उसकी बहन ट्यूशन में जा रहे होंगे. कब कब का आंसर देना है, तो दैट यू हैव टू ऐड. कब जा रहे होंगे? Raju and his By sister. 5 p.m. Raju and his sister will be going to tuition at 5 p.m. Very good. Now there are difference. Yes, Now- ma'am. Okay. Now have you written it? Write one more sentence. Write one more sentence. You should mention a time. Whatever sentence you will write, you should mention a time. And write something different. Go, and these are very common verbs. Use something different. Yes. Ma'am, I will be definitely catching the thief by 2 p.m. बेटा तुम श्योर कैसे हो कि तुम थीफ को 2 बजे पकड़ ही लोगे? आर यू श्योर? ऐसी बात में बोलो ना कि हम दो. हाउ कैन यू से दैट एट बाई 2 p.m. आई विल बी कैचिंग द थीफ. मैं 2 बजे उसको पकड़ रहा हूँ, चोर को पकड़ रहा हूँ. ऐसे कैसे आप बोल सकते हो?
हाँ, तुम खेलने का बोल सकते हो, आई विल बी प्लेइंग टेनिस बाय 5 PM टुमारो और बाय 2 PM टुमारो। ये हो सकता है कि हम कल 2 बजे खेल रहे होंगे, दैट कुड बी पॉसिबल। पर हम चोर को पकड़ रहे होंगे, ये कैसे पॉसिबल है? कुछ ऐसा बोलो मीनिंगफुल, सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल। ओके, But after that, now I'm not understand that you say the sentence. you should make a meaningful sentence, because it is not, there is no surety that you will catch the thief by 2 PM. There is no surety, okay? Otherwise, grammatically sentence is correct, but it is not a meaningful sentence. You have to give a meaningful sentence. Okay, try to give some meaningful sentence. Okay, ma'am. हम सेंटेंस आपने क्या बोला था? वो मैंने कुछ भी बोला, आप अपना बनाओ ना। शाम को 5 बजे तुम लोग क्या करते हो? चाय पीते हो, दूध पीते हो? at 4:40. हाँ, तो वही लिखो, राइट दैट वी विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, वही लिखो, जो करते हो वो लिखो। We will be drinking tea by 4:40 PM. Right, we will be drinking tea by 4:40 PM. Absolutely right, absolutely right. Okay, now beta, one thing I want to tell you, the simple present and simple future tense, there are some times when simple present is also used as simple future. In simple present में हम बोल रहे हैं, पर हम बोल कुछ ऐसा रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाला है, तो that time, though the sentence is in simple present, but it gives the meaning of simple future. Like, the IPL match will begin next month. IPL मैच अगले महीने से शुरू होगा. That means the work is, the meaning is in future, पर हम उसको बोल रहे हैं present में. समझ में आ रहा है? कोई ऐसी चीज जो आपको बाद में करनी है, पर आप बोल उसका प्लानिंग अभी कर रहे हो या बता अभी रहे हो, एट दैट टाइम समटाइम्स